for this webinar. I, Dr. Shilpa Bhargava, feels a great pleasure to extend a hearty welcome on behalf of Chhattisgarh Adolescent Health Academy, who has clubbed all of us for this scholastic webinar. It's our pleasure to welcome honorable guests present over here for the webinar. We are glad to welcome Dr. Prakash Veer Arya sir, Dr. Pukhraj Bafna sir, Dr. Madhushree Deshpande ma'am, Dr. Umesh Khurana sir, Dr. Kiran Makhija sir, Dr. Piyali Bhattacharya ma'am, Dr. Sangeeta Joshi ma'am, Dr. Om Prakash sir, Dr. KP Sarabhai sir, Dr. Shailja Mane ma'am, Dr. Upendra Kinjwadekar sir, Dr. R.K. Agrawal sir, Dr. Balvinder Jindal, Dr. Amar Singh Thakur sir, Dr. Gajendra Jangle, and many more esteemed faculties, which we are very proud to have you all here for this webinar. Thanks to all the esteemed guests to join us for this webinar. I deem it a great privilege to welcome and invite our National Secretary of Adolescent Health Academy, Dr. Prakash Veer Arya sir, the sculpture of wisdom and seasoned scholar, to have a few words of wisdom and bless us with his words. So please. ग्वालियर एकेडमी यस सॉरी एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी के सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो छत्तीसगढ़ जो काम कर रही है और एडोलेसेंट की ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही टचिंग है। डॉक्टर पुखराज बाफना सर और डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य मैडम बहुत अच्छी तरह इसके साथ इंसाफ करेंगी। बस आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जो इसमें एस्टीम्स गेस्ट जो मौजूद हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग आए और उन्होंने इसको ज्वाइन किया। खासतौर से अपने एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर उपेंद्र सर और डॉक्टर पुखराज सर, बाकी सभी लोगों को लिए बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. We now start with our first session by our first speaker, dynamic and proficient orator, Dr. Piyali Bhattacharya ma'am. I would like to request our State President, Chhattisgarh IAP, Dr. Kiran Makhija sir, to kindly give her introduction to the panel. Thank you. Thank you, Shilpa. And first of all, from the state of Chhattisgarh Academy of Pediatrics as well as the AHA chapter, I welcome all the dignitaries, especially our past president, Dr. Upendra Kinjwadekar sir, and all the dignitaries from the nationwide, Dr. Arya sir, who is the secretary of the Central AHA. And there is no need of introducing our guest speaker, Dr. Piyali madam, and she is very decent, humble, and helpful forever, always. And we call her as Didi. She is the Didi of all the IIPN, of particularly of my age. We all usually call her as the Didi of our IIP. And being as a speaker, she is silver tongue, outspoken, and voluble. And she is very expressive in her all the talks. And we have seen her. She has equal command in Hindi as well as in the English language. And beside the introduction, what I remember when I was there in the GDBP conference in Agra, madam is also remembering that part. We had the role play, and 3 role plays were conducted in 1.5 hour session: mad, sad, and bad. And she was my doctor in that role play. We were only 3 players. I was the patient who defining all the roles of the mad, sad, and bad, along with Dr. Manoj Jain, who is the very key person there in Agra, having a great actor in his performance. And with coming to the formality, what madam is there, and she was the vice president of our
Central IIP in 2023 from the Central Zone, and she was the EB in the Central AHA Central Zone 2023. And she is affiliated to the SGPGI Lucknow. And many orations are there in her name. Dr. A.K. Dikshit Oration 2023, Hyderabad, Professor S.N. Sengupta Memorial Oration in 2021, West Bengal, Professor Indu Waklu Oration 2020, Lucknow, and Dr. Malabika Memorial Oration in 2019, Howrah. She had various publications. I will enumerate only the few of those publications which are of the International Journal of the Virology Methods, and she is being the author of 27 plus book chapters, and she had contributed a lot in IAP guidelines and many of the guidelines which were famous, like she had the standard treatment guidelines on anticipatory guidance, IIP committee, and author in the 101 parenting guidelines in 2020 and 21 under leadership of Dr. Piyush Gupta. And was the member of member task force on IIP school reopening guidelines during COVID time. And she was the committee member of the IIP guidelines, management of the suicidal behavior in office practice 2019. And she is having the relevant topic today of the depression in our Chhattisgarh chapter of the AHA. With this, I invite our guest speaker, Dr. Piyali ma'am, to deliver her talk. Thank you so much. And इतना सब बोल के आपने डरा दिया है मेरे को. So let's start with adolescent depression. So when I say adolescent depression, we all must think of what is happening actually. Adolescent depression कितना है, क्यों है, क्या है. I remember when Kavita invited me, she said कि मैडम ऑफिस प्रैक्टिस की बात करिएगा, हमको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, हम क्या देखना चाहिए, क्या नहीं, कैसे डायग्नोज करना चाहिए, और करें भी तो हम क्या कर सकते हैं, बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. सो इट्स वेरी इम्प्रेस्ड कि दिस इज हाउ वी शुड एक्चुअली बी गोइंग अहेड. So if we look at the statistics of adolescent depression, remember there was a UNICEF survey recently done, and it says that in India, about 14% of children between 15 to 24, that is adolescents and young adults, have reported frequently feeling depressed. When WHO did the survey, they said about 4.5, that is 56 million, if not more, of Indian population is affected by depressive disorder. Now, having said that, let's have a few scenarios. What is happening? This is Sharmila, a 15-year-old class 10 student. She has been experiencing a range of emotions lately. Otherwise, an outgoing, energetic, enthusiastic girl. And for the past few months, her parents have noticed that there's a change in her behavior. What are the changes? She has become withdrawn, she has become irritable, and she has lost interest in activities she used to enjoy. She often feels fatigue, she's tired, she has trouble sleeping, and her grades have started to decline. So what are the signs and symptoms which are visible here? In her, we can see there are emotional changes. That is, she's irritable, she's angry, there is a sadness about her. There is a social withdrawal. She's not going meeting her friends, she's isolating herself in her room. Then there are changes in sleep pattern. There is a fatigue, irritability even during daytime because of this altered sleep pattern. And of course, the sports that she used to enjoy, the hobbies, the music that she used to enjoy, there is a loss of interest. Along with that,
she struggles to concentrate, somewhat due to the sleep pattern, somewhat because of the emotional changes. She struggles to concentrate, and she is so overwhelmed with the schoolwork that she has started procrastinating now. Kal kar lungi, parsu kar lungi, and as it is, her academic grades are declining. Now, what would be our thoughts about this girl? So let us consider another case. This is a scenario where there is a 16-year-old boy. Now, this boy is a vibrant teenager, but suddenly his parents say कि गुस्सा बहुत करता है. He is very aggressive in his behavior these days, and चीजें तोड़ता है, दरवाजा जोर से बंद करता है. देखो, जो चीजें खाना पसंद करता था, ये तो चिकन इतना पसंद करता था, he is not eating, he's left his appetite also. Spends hours on his phones and computers and avoids social interaction. And parents, जब वो स्कूल गया, they went to his room and found a beer bottle also in his room. So बोल रहे हैं, अरे ये क्या हो गया हमारे बच्चे को? Now again, there are emotional changes in this child. Emotional changes being that the child is agitated, the child avoids social withdrawal, is there, avoids social gatherings, his appetite has changed, there's a weight loss. There may be a gain in some children also, and he has difficulty in concentrating. So there is restlessness in this child. And look at this, there is a substance abuse. There was a beer bottle in his room, so there is a substance use now. This shows that the coping mechanisms are not adequate and the child is going into substance use. Now, there is some masking of symptoms also. He is frequently presenting with headaches, kabhi sar mein dard hai, kabhi pet mein dard hai, or fatigue. So for which he has been investigated and there are no medical causes. So considering these two scenarios, we need to understand that these globally around 1 in 7, 10 to 19-year-old teens are experiencing mental disorders. Depression, anxiety, behavioral disorders are leading causes of illness. And suicide is one of the leading causes of mortality. So the consequences, why we are finding it so important, and kudos to Chhattisgarh Academy for actually bringing this out, because the consequences of failing to address this extends to the adulthood of the child. So then it becomes limited opportunities. The child does not have a fulfilling adult life. So if we say that why is the child more prone, we have to understand that they are basically teen brains are structurally different from the adult brain. You can see over here the age 5 and the age 20, as demyelination is processing, these teens are emotionally very, very labile and their reward center is more developed. So they are susceptible to disruption by events, by experiences, and therefore even a small word of sort of anger from a parent would actually disrupt them emotionally. So they are very prone and their emotional control is very labile. So that is why they need to be addressed significantly. So if you say that, then what are the risk factors? Amongst the risk factors, genetics plays some role. Teenagers, those who have a family history, घर में कोई भी एक को अगर कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, suicidal tendency है, so then they are at a higher risk. Not only that, those adolescents who face any kind of trauma, that is sexual abuse or violence, or even if they are involved in accidents. If I quote, then abhi jo Ukraine mein ho raha hai, those adolescents who are in Ukraine, they are being subjected to the trauma of war. So this may cause anxiety, depression. Environment is another factor. Environment हमारे घर का, हमारे स्कूल का, हमारे socially चारों तरफ का. So if there is anything at home like abuse or neglect or authoritative parenting or divorce in the family, death in the family, that can cause
that can be a risk factor. School में learning disability है, struggling to fit in, sudden school changes हुए हैं और उसके बाद आप घुस नहीं पा रहे हो उस पूरे ग्रुप में जिसमें कि आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो, being bullied over there, or simply socially if there is poverty, they will all contribute to depression and anxiety. So risk taking behavior, remember, comes out of all of these only. Because of the difference in the brain, we have found that those teenagers who are suffering from depression and anxiety, उनके neurotransmitters का level ही different होता है. So dopamine, serotonin, norepinephrine are all raised, and therefore there is a dysregulation between the mood and the behaviors. Not only that, those children who use substance misuse, the drugs, alcohol, that also affects the mood and leads to depression. A very big factor being media. It has been found that when too much of media use is there, like internet gaming disorders, etc., there is a depression in these children. The stresses of puberty in itself are enough stress for the child to affect their moods. And negative thought patterns. घर में अगर फादर बोल रहा है गधा कहीं का, तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरा क्या होगा, जिंदगी में क्या झाड़ू मार के खाएगा, भीख मांग के खाएगा. So continuous exposure to negative thinking from parents is actually bringing in depression and anxiety in the child. One very big factor that we often forget is अभी हमने autism day मनाया है. So adolescents with any chronic illness, autism spectrum disorders, intellectual disabilities, orphans, the minority ethnics, these are living in very fragile settings, and their mental and moods swings are actually there, and they may be fraught with a lot of anxiety and depression. एक नई चीज जो हम लोगों ने अभी तक सोचा ही नहीं था is a long-term exposure to multiple ambient air pollutants and association with incident depression and anxiety. Research indicates that there is a strong link between air pollution and mental health issues. Especially the pollutant ozone has been linked to it. It is associated with depressive symptoms. Other than ozone also, there are multiple factors like the air pollutants cause remarkable rises in the inflammatory biomarkers. So ये जो inflammatory biomarkers हैं, इनमें भी देखा गया है कि in the boys interleukin 2 and in the girls interleukin 6 ये बढ़ जाते हैं. And once this happens, these biomarkers will actually be linked to incident depression and anxiety. So this we have to look into very strongly. IIP has to say that we have to look into air pollution also, and we have to side with the government to see that these air pollutions in our local areas are decreased. So once we have talked about the risk factors, let us also think about the protective factors. Protective factors, you all know that unless we have the life skills, अगर हमें आता ही नहीं है problem solving, अगर हमने life skills सीखे ही नहीं है, तो फिर हम manage नहीं कर पाएंगे, whereas decision making नहीं कर पाएंगे. So all of you know the story of the thirsty crow कि कैसे वो आके self awareness, the 10 life skills that WHO has said, कि उसने आया, देखा चारों तरफ, उसने देखा प्यास लगी है, सेल्फ अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है. एंड उसके बाद उसने अगल बगल देखा तो उसने देखा कि पानी है. सो रियलाइजिंग व्हाट द एनवायरनमेंट इज लाइक, एंड देन उसने उसमें पत्थर डाला. सो क्रिएटिविटी, ऑल द लाइफ स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट बी देयर इन अ चाइल्ड. एंड इफ इट इज देयर, अगर अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग, अप्रोप्रिएट स्कूलिंग हुई है और बच्चे ने ये सीखे हैं, so that will be a very big protective action for the child. Resilience, आपने सबने रॉबर्ट ब्रूस की कहानी सुनी होगी, how he was in the war with England, Scotland versus England. He was beaten many a times by the British army, and तब वो एक केव में छिप कर बैठा था, अपने बिल्कुल रगड़ खा के उसकी आर्मी बैठी हुई थी अंदर, and he said that अब मेरा कुछ नहीं होगा.
5 से 7 बार हो गए मैं हार चुका हूं. And at that moment he saw the spider swinging and making his web. कई बार 10, 15, 20 बार स्पाइडर ने स्विंग करने की कोशिश की और फाइनली 21वीं बार में स्पाइडर वाज सक्सेसफुल. उसको देख के रॉबर्ट ब्रूस बोला दैट स्पाइडर इज रेजिलिएंट, व्हाई कांट आई बी रेजिलिएंट, लेट मी बाउंस बैक. So he collected his army and he won the battle. So resilience आपको बच्चों में देना है. That is a very big protective factor. How to bounce back. पैर पसर के बैठ के रोना नहीं है कि हम खो गए हैं, रास्ते निकालने हैं कि हम निकलें कैसे यहाँ से. सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जब हमारे पास यार दोस्त होते हैं ना तो हम बड़े खुश रहते हैं, हमारे में डिप्रेशन नहीं आता है. सो आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स अमंगस्ट यू, आई कैन ऑलवेज टॉक टू. सो ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आई एम पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, आई एम पार्ट ऑफ AHA. सो सिक्योर अटैचमेंट टू अ पॉजिटिव पेरेंट, टू अ फैमिली. कोई तो होगा जिससे हमारा एक अटैचमेंट होगा, मामा मासी, भाई बहन, माँ पिताजी, कोई तो होगा जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हमारी अटैचमेंट हो. सो एंड पियर्स, फ्रेंड्स एक सर्टेन एज पे आके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं, जिस वजह से हम लोग पियर एजुकेटर्स बनाते हैं या बडीज, चड्डी बड्डी बोलते हैं हम लोग, वो बनाते हैं. सो पियर्स बिकम अ वेरी बिग प्रोटेक्टिव फैक्टर. एंड इफ दे कैन recognize what is the issue, and if they can give us appropriate advice or take us to people who give us appropriate advice, that is a very big protective factor. And appropriate disciplining, appropriate limiting factors. So आप हर चीज में ना ही करते रहते हो बच्चों को, ये याद रखना. हर चीज में ना नहीं करना है, किसी चीज में तो हाँ कहना है. सो मैक्सिमम नाज में 50-50% कर लेंगे तो दैट इज अ वेरी बिग प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. एंड ऑफ कोर्स सेल्फ एस्टीम, बच्चे को कुछ चीजें, उसको ये नहीं कहना है कितना काला है, उससे कहना है कि भाई तूने ये मैथ्स का सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा किया है. So he has certain qualities which has to be brought up instead of pointing him up and lowering his self-esteem in certain things. So you have to always remember good self-esteem, a successful citizen, and good mental health will be led by all these things. So when we talk about common mental disorders, तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स. जब हम बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं उसमें ADHD, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, साइकोसिस, ये सब आ रहे हैं. और इसके साथ में आता है सुसाइड एंड सेल्फ हार्म. सुसाइड और सेल्फ हार्म की जहां बात कर लेते हैं वहां पर रिमेंबर देयर इज अ वेरी हाई depression rate amongst these children, and therefore depression and this depression and anxiety can give rise to a 12-fold rise in suicide in these children, because these children have been found to have less of coping skills. There are certain other factors. 10 साल का बच्चा भी अब बीड़ी पी रहा है गांव में, सिगरेट पी रहा है गांव में, लोकल बियर पी रहा है, लोकल अल्कोहल पी रहा है. सो रिमेंबर देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक द हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल. देन देयर आर बैरियर्स. हमारे पास हैं कितने मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट? सो इट इज ऑफन दैट दे विल कम एंड दे विल टॉक टू देयर पीडियाट्रिशियन अंकल और आंट. Risk-taking behavior, I told you, it is a very normal thing in children of this age because they are experimenting. And the worldwide prevalence of risk-taking behavior, especially of heavy drinking, use of cannabis and tobacco, all these are very, very high. अब जब emotional, coming back to our own topic, emotional disorders. Emotional disorders की जहां बात करते हैं वहां anxiety and depression go hand in hand. Anxiety is the most prevalent one, and after that comes depression. Adolescents aged 10 to 14 years and comparing them to a little later, that is 15 to 19 years. So middle adolescents और late adolescents में जब comparison करते हैं तो I think late adolescent में जो surveys आए हैं उसमें the rate of depression increases, possibly because of so many other pressures which come in. The rate of depression is higher in the 15 to 19 year age group. How do you diagnose? Diagnosis के लिए we are scientific people. There are certain criteria for diagnosis. अब DSM-5 criteria for diagnosis of depression says that amongst A1 to A9,
आपके पास कम से कम 5 या मोर क्राइटेरिया होने चाहिए, जिसमें से A1 एंड A2 आर एक्चुअली एसेंशियल। उसमें से ईदर ऑफ देम, A1 या A2, उनमें होना ही चाहिए, जिसमें डिप्रेस्ड मूड या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज वो होना ही चाहिए, प्लस 4 और होने चाहिए। सो टोटल ऑफ 5, amongst which you should have A1 और A2. अब कभी कभी हम लोग ग्रीफ रिएक्शन को भी डिप्रेशन समझ लेते हैं. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ग्रीफ रिएक्शन एंड डिप्रेशन. अब लाइक आई हैव लॉस्ट माय मासी रिसेंटली. आई वेंट, उनका सारा काम हुआ. आई क्राइड बैडली बिकॉज आई मिस हर. But I and my sister, we talked about the good memories. मासी कितना अच्छा पका के खिलाती थी, मासी की एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे भी साड़ी बना के दी है. And when I came back, I sort of mingled with the other people who were here, joined back to work, and that was a grief reaction. But depression is 2 weeks हो गए हैं, अभी तक हम उबर ही नहीं पाए हैं उससे. So mood is always negative and there is a feeling of worthlessness in me कि मैं जो है ठीक हो ही नहीं पा रहा हूं. So that is depression, which is long continued with a feeling of loss of pleasure activities, with a feeling of worthlessness. तो क्या करना चाहिए? हम लोग को एक रिस्क असेसमेंट करना चाहिए. तो रिस्क असेसमेंट जब हम करेंगे, उसमें फीचर्स ऑफ डिस्ट्रेस कौन से वाले हैं, हमें ये देखना है कि फिजिकल फीचर्स हैं, साइकोलॉजिकल फीचर्स हैं, या बिहेवियरल फीचर्स हैं. मतलब वो हेडेक या स्वेटिंग ही बोल रहा है, या स्लीप डिस्टर्बेंस बोल रहा है, या साइकोलॉजिकली बोल रहा है आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, आई एम सैड, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या फिर बिहेवियरल कहता है मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, तोड़फोड़ करता हूँ, मैं कमरे में बंद हो जाता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ मेरा पूरा रिलेशनशिप खराब हो गया है. अब उसमें भी यू मस्ट आइडेंटिफाई द सीरियस केसेस. सीरियस केसेस कौन होते हैं? दोज हु आर सर्चिंग फॉर मेथड्स ऑफ सुसाइड, those who are hurting themselves, those who have made previous attempt, या those who have had final arrangements. अभी एक बच्चे आए थे मेरे पास, उसने बोला कि मैंने तो 10th पास कर लिया है और जेई के लिए पढ़ रहा हूँ, तो पुराने किताबें हैं, जेई की किताबें हैं, मेरे पास अपना कमरा है, तो मैंने सोचा है कि आग लगा लूंगा. सो आई सेड कि अच्छा आप आग लगा लोगे तो आपको तो तकलीफ होगी सांस में, आप कैसे करोगे? बोले वो मैं दरवाजे में लॉक कर लूंगा, मेरे फादर एनेस्थेटिस्ट है, उनका एक इंजेक्शन लेके मैं अपने आप को लगा लूंगा. सो फाइनल अरेंजमेंट्स दैट बॉय हैज ऑलरेडी थॉट. सो दीज आर वेरी वेरी सीरियस केसेस ऑफ डिप्रेशन. और कुछ होते हैं मास्क डिप्रेशन. हर दिन चले आ रहे हैं कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हर दिन चले आ रहे हैं. So these are masked depressions. You must find out, you identify these serious cases. So in a nutshell, feeling of worthlessness, anhedonia, या loss of interest in things that you previously enjoy, या giving away your precious things, withdrawal from family and friends, intense sadness in the form of crying, sitting alone, irritability, inability to sleep, and loss of appetite or increase in appetite. ये सारे आपको बताएंगे. अगर ऐसे सिम्टम्स लेके आते हैं तो आपको देखना है कि आपको कहीं इन बच्चे में डिप्रेशन तो नहीं है. Now once you have thought of that, there are multiple tools for detection. अब physical examination and blood tests must be done, because even a simple anemia can cause depression. Even a simple thyroid hormone problem can present as depression. So to rule out other medical illnesses, you must do some blood tests. अब blood tests में भी, let me tell you, in the newer research, people have found that mRNA या microRNA जो होता है, there is a 9 specific mRNAs which are higher in children who suffer from depression. So blood tests तो हमारे करने ही करने हैं. इसके बाद आता है psychological assessment. तो that all of you as members of AHA know that heads हम लोग करते हैं, and heads will actually bring out कि उसमें क्या problem हो रही है. So once you have done heads, then you go to the depression questionnaires. There are multiple assessment tools, you know.
क्वेश्चनर्स में कुछ मैंने पॉइंट आउट किए हैं यहाँ, PHQ2 and PHQ9A for the adolescents. PHQ9 adults के लिए भी होता है, adolescents के लिए भी होता है. And then you have the teen screening questionnaire on mental health, TSQM. And PHQ9A and BDI are the tests which have the highest sensitivity and specificity, and they are actually validated tools. So you can actually do them even in your OPD. OPD में क्या कर सकते हैं हम? PHQ2 कर सकते हैं. PHQ2 में last 2 weeks की history लेनी है. Now this 3+3 final score 6 से तक हो सकते हैं. So 0 to 6 के इसमें scores होंगे. एनी स्कोर, 2 ही तो सवाल पूछने हैं कि आपको जो आप काम करते थे, आप क्या पसंद करते थे, आप फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, उसमें अब आपको आनंद आ रहा है? बोलेगा नहीं, एकदम नहीं आ रहा है, कितने दिन से नहीं आ रहा है. और important is most of the day होना चाहिए, more than half the day होना चाहिए, and nearly every day होना चाहिए. So last 2 weeks की एक history ये बच्चा हमें देगा कि उसको whether he is feeling hopelessness, feeling loss of interest. So ये 2 सवाल में ही आपका हो जाएगा. If the score is greater than 3, तो तब हम मूव करेंगे PHU9 पे. यहाँ पर हमारे पास 9 सवाल हैं और इन 9 सवालों में हमने ऐड कर लिया है लॉस ऑफ प्लेजर के साथ में, वर्थलेसनेस की फीलिंग के साथ में, एनी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, एनी स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एनी प्रॉब्लम विद स्कूल वर्क, एपेटाइट, फटीग एक्सेट्रा. So these are very intensive ones. अब जब 9 क्वेश्चन इसके खत्म हो जाते हैं, this is followed by an interview कि past 1 year में कैसा रहा, past अब ये तो 2 weeks के थे पूरी हिस्ट्री, इसके बाद हम past 1 year, past 1 month इसमें चले गए. एंड उसके बाद आपने स्कोरिंग कर ली. स्कोरिंग करने के बाद आप सबसे नीचे देखिए स्कोरिंग में आपके पास 0 to 4 है, टोटल स्कोर 27 तक जाता है, और 0 to 4 जो है वो आपका माइल्डर, ये ग्रेटर देन जब हो जाता है ना 5, तब इसको हम लोग कहते हैं कि इसमें माइल्ड डिप्रेशन शुरू हो गया है, और 27 तक जाते जाते तो ये सीवियर डिप्रेशन में पहुंच गया बच्चा. अब आए BDI2 के. BDI2 या बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी 2 इज अनदर मेथड. इसमें ये 21 सवाल हैं. This is actually derived from the DSM only. DSM-5 के ही सवाल हैं जो BDI2 में ले लिए गए हैं, और इसमें भी हम लोग स्कोरिंग सिस्टम है. इन 21 सवालों का हम स्कोरिंग करते हैं, और स्कोरिंग करके हम देख लेते हैं कि 0 to 63 में up to 10 is normal, और 10 के बाद शुरू होता है 11 to 16 में माइल्ड, और फिर जैसे जैसे बढ़ता है हम उसको बोलते हैं बॉर्डरलाइन डिप्रेशन, या मॉडरेट डिप्रेशन, या सीवियर डिप्रेशन, या एक्सट्रीम डिप्रेशन. दिस इज अ वेरी नाइस पिक्टोरियल थिंग विच यू कैन गिव टू एवरी चाइल्ड. अब ये बगल में जो बच्चा बैठा है गाल पे हाथ रख के, यू कैन आस्क द चाइल्ड कि ये देखो ये बच्चा है, डू यू फील लाइक सैड एज ही डज? तो वो बच्चा बताएगा हाँ मैं सैड फील कर रहा हूँ. तो हाउ मच, हाउ ऑफन, और नीचे वाले पिक्चर को देख के हम बोलेंगे अब इनमें से बताओ तो कितना ज्यादा आप फील करते हो, तो वो बताएगा कि इतना सा, इतना सा, इतना सा, कितना सा. So this pictorial depiction can be given to the child to assess, and this is relevant between 6 and 16 years. अब रेड फ्लैग साइंस कैसे हम लोग करते हैं? जिन बच्चों में NSSIs होते हैं या नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजुरी, अपने हाथ में कट कर रहे हैं, बार बार अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, सर ठोक रहे हैं, ऐसे बच्चों में दिस इज ए रेड फ्लैग साइन NSSI. और इस पाथ फॉर्म एक निमोनिक है जिसके हिसाब से वी आर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग the child if they have any of these in a comprehensive manner. And if there is loss of interest, there is irritability, hopelessness, withdrawal, this is taken as a red flag sign. मैनेजमेंट जैसा कि हम बोल रहे थे कि अगर डिफरेंट मोड्स हैं करने के तो मैनेजमेंट भी मल्टी मॉडल ही होगा. तो मैनेजमेंट में एक तो हम CBT और इंटरपर्सनल थेरेपी करते हैं विच इज कॉल्ड अ टॉक थेरेपी सेशन. बातचीत में होता है ये. तो बच्चा इस दौरान ही विल टॉक, he will listen,
and he will also learn new skills. So CBT जो है वो it focuses on behavior and feelings, whereas interpersonal therapy will focus on interpersonal relationships. So it can be a group therapy session, it can be family focused, because family co has to understand what are the modalities, why this is happening. And घर में सपोजिंग ऑथोरिटेरियन पेरेंट है तो उसको तो बताना पड़ेगा ना कि आपका यू आर नॉट डूइंग इट राइट. So these are family focused therapies. Academic support at school, so सारे जगह पे, at home, at school, in the society, you have to give. And what are the medication therapies, and lastly what is the medical detox? We must talk about that also. So first you do a screening and evaluation and risk assessment, then you do a psychoeducation, and then you do a psychotherapeutics, and then you go for a pharmacotherapy. So when we talk about pharmacotherapy, हमारी झोली में बहुत कम drugs हैं, escitalopram and fluoxetine, SSRIs, these are the most used and tested drugs. बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटे बच्चे में आप ये दे नहीं सकते हो. दे आर नॉट ऑथोराइज्ड टू बी गिवन टू चिल्ड्रन लेस देन 12 years of age. अब इनमें आप SSRIs दे दिए हैं, पर इन SSRIs को आपको मिनिमम ऑफ 6 to 8 weeks देना है. एंड इफ देर इज अ रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, अगर आपको लग रहा है बच्चा सुसाइड करने जा रहा है, तो आपको हॉस्पिटलाइज करके इंटेंसिव साइकियाट्रिक थेरेपी देना है. उसमें फिर आप पीडियाट्रिशियन, प्लीज डोंट इंटरवीन इनटू दैट, रिमेन ए ब्रिज बिटवीन द साइकियाट्रिस्ट एंड द चाइल्ड. एंड ऑफ कोर्स वी हैव सो मेनी alternative medicines like acupressure, relaxation techniques, yoga. प्रीति आप लोगों को मेडिटेशन के बारे में जरूर बताती होगी. कुछ लोग एरोमाथेरेपी करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, गाना गाते हैं, आर्ट थेरेपी करते हैं. So there are so many substitutes, but they are not substitutes totally. You go along with your CBT, along with your medication, and they are not substitutes, but they are actually adjuncts to your therapy. Talking about, मैंने एक बात कही थी, मेडिकल डिटॉक्स. डिटॉक्स आपको अगर कोई लत लग गई है, कोई बीमारी है, कोई अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उसमें भी डिटॉक्स करते हैं. पर ये तो आपने ड्रग्स दिए, यू हैव गिवन एंटी डिप्रेसेंट्स, उनको भी आपने 8 हफ्ते से ज्यादा दिया है, आपको टेपर करना है. सो यू नीड टू मेडिकली डिटॉक्स दिस चाइल्ड बिकॉज सीवियर विथड्रॉल विल अराइज इफ यू आर ट्राइंग टू सडनली स्टॉप द मेडिकेशन. So this you have to do with the psychiatrist's guidance, because the brain will need time to adjust to the changing levels of the neurotransmitters. अब जब शर्मिला की बात आई, हम वापस आए उस लड़की पे, उसको हमने ओपन कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स किया, उसको CBT दिया, उसको प्रोफेशनल हेल्प दिया. एंड नेवर फॉरगेट कि हमको हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर से बोलना है, बैलेंस्ड डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर स्लीप, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट सिस्टम, उनके पेयर्स के साथ उनके प्रोग्रेस उसकी मॉनिटर करी जा रही थी. आलोक की बात जहां करी, आलोक को भी हमने हेल्दी हैबिट्स बोला, और साथ में बोला कि ये जो आप कंप्यूटर और लैपटॉप पे लगे रहते हो, प्लीज गो एंड लिमिट योर स्क्रीन टाइम. कैसे करना है? देयर आर सो मेनी एप्स व्हिच यू कैन यूज, एंड ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, कि आप गुस्सा मत करो, थप्पड़ मत लगाओ उसको, उसकी बात को समझो. Now this is the last slide, almost the last slide that I have reached. आपको ये पूरा DSM-5 का क्राइटेरिया फॉलो करना है. पहले स्क्रीनिंग करनी है, डिफरेंशिएट करना है बाकी फिजिकल डिजीजेस से, फिर आपको PHQ-9 और TSQM देना है उनको टेस्ट, और उनको CBT या REBT के लिए भेजना है. साथ में जरूरत है तो SSRIs देना है. एंड इट इज अ टीम अप्रोच, आप अकेले नहीं कर सकते. पेरेंट्स को, टीचर्स को, साइकियाट्रिस्ट को, साइकोथेरेपिस्ट को, पीडियाट्रिशियन अंकल को साथ में लगना है. एंड व्हाट इज न्यू नाउ, अब जो है, हम लोग कहते थे ना पहले कि हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है. अब बोलते हैं कि अगर डिटॉक्स ही करना है, डिजिटल ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन करो, क्योंकि ये बच्चे भाग जाते हैं, 2-4 सेशन लेके दे आर आउट ऑफ इट, फिर आते ही नहीं है, तो इनको डिजिटल ट्रीटमेंट करो. सो नाउ वी हैव डिजिटल ट्रीटमेंट ऑल्सो. We have apps, we have video games which we use as a treatment, and they have been tried now in many children, and they have been found to be effective. The children carry out. So what is the mantra? The mantra is reduce stress,
खूब म्यूजिक चलाओ, खूब नाचो, खूब चड्डी बड्डी बनाओ और खूब ओम मेडिटेशन करो. Thank you so much for giving me such a nice hearing. Thank you. Thanks a lot, ma'am, for such an entraining and spellbinding talk. I would like to request Dr. Kiran Makhija sir to open the session for question answer if we have. Yes. Is there any question in the chat box or Dr. Shilpa, can you see? I don't see any question. No, sir. There are No, So sir. many comments are there, but those Yes. are the appraisals for ma'am. She is wonderful in her expression and she is very clear in her message also. Ma'am, I have few of the questions that do you find that any type of personalities in the kids, which type of the personalities those are the more prone towards the depression? See, these children by the age of 14, you will be able to detect whether they have some problem or not. So अगर mental disorder, anxiety disorder या as I have said कि conduct disorders हो सकते हैं, mental disorders हो सकते हैं, behavioral disorders हो सकते हैं, ये पहले ही पकड़ में आ जाते हैं. So there are personalities, yes, definitely, whom you can catch by the age of 14, who will actually go into, later on they will go into suicidal tendencies also. And of course genetics is a major part of it. अगर घर में है तो होने की संभावना बढ़ जाती है. And few of the patients like those are introvert or very shy in nature. Not Those are, necessarily. Not yes. necessarily. Those who are depressed can be overtly also very excitable, and those who are depressed can be actually withdrawn also. दोनों चीजें ही हो सकती हैं कि बहुत जुबिलिएशन, बहुत खुशी दिखा रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, और बहुत सैड है, बहुत क्राई है. There are two extremes of mood swings and behaviors. And many of the patients they come with the excess of the screen time. Please, मैडम उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाने में पेरेंट्स को भी टाइम नहीं है, तो दे वांट द लिबर्टी एंड दे वांट द फ्री टाइम एंड गिविंग गैजेट्स टू देयर किड्स, एंड किड्स आर आल्सो वेरी मच एडिक्टेड नाउ. तो इसीलिए निमहांस में शट क्लिनिक खोलना पड़ा, क्योंकि नेटफ्लिक्स को एडिक्टेड पहला बच्चा आया जिसको उनको ट्रीट करना पड़ा. सो दिस इज, यू हैव टू निप इट इन द बड. आप उनको मोबाइल देके खाना खिलाओगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी. ये नहीं कर सकते कि सडनली आप छुड़ा दो उनको और आप देते रहो. So So yes, the preventive strategies can be started at early age as also for early as parents. 0 day उनको मत Yes. दिखाओ, मत दो. एंड पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है. अगर बच्चा आपके बगल में है और आप गोद में लिए हो और आप खुद इतना व्हाट्सएपिंग और स्क्रीनिंग कर रहे हो, वो तो पैदा ही हुआ मोबाइल्स के साथ में ना, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम नॉट टू गो फॉर मोबाइल्स? तो हाथ बढ़ा के मांगेगा ना, तब आप उसके हाथ पे चांटा मारोगे, बोलोगे कि नहीं देना है. सो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. So those patients may become the depressive in nature also. Yes, it has been found, research has been conclusive that those people who look into screens too much suffer from depressive symptoms, because वो असली दुनिया नहीं है. They lose Yes. touch with the real world. Yes, they don't have the support system from the other aspects also. Thank you मैम very एक much, जो ma'am. सबसे And बड़ी, for the, हाँ, मैम मेरा एक Dr. सवाल, Kapil? जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं होती अगर बच्चों में डिप्रेशन है तो. देन हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन? ना वो काउंसलिंग के लिए रेडी होंगे ना ट्रीटमेंट के लिए. देन हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन? Yes. देखो, जब बच्चा नहीं राजी होता है तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं, उसको बोल देना कि आप हमारे पास आ रहे हो तो उसको डिस्कस करोगे. तो बच्चा बिकम्स क्यूरियस एंड सेज कि अच्छा मेरे को डिस्कस करेंगे मेरे बगैर. सेकंड सेशन में बोलेगा अच्छा मैं चलूंगा, सुनूंगा आपने क्या बोला. सो तू डाल में पात स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ती है. और जो पेरेंट्स भाग जाएंगे, एज आई सेड, डिप्रेसिव सिम्टम्स के बच्चे थेरेपीज लेने से भाग जाते हैं, 4-5 सेशंस करके भाग जाते हैं, ड्रग्स विथड्रॉ हो जाते हैं, दे स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन. दैट इज अ ह्यूज थिंग. बट जो डिप्रेस्ड पेशेंट्स होते हैं, दे विल ऑलवेज सीक हेल्प समवेयर और द अदर. अंकल या आंट के पास जाके बोलेंगे, आपके पास आके बोलेंगे. दिस अ वेरी गुड राइट अप, यू नो, आई कैन टेल यू बिकॉज यू आर अ डॉक्टर. सो
actually they go and seek help somewhere. If you can catch them at that point and proper counseling होती है, आएंगे आपके पास. But dropout सच में बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है. Madam, one question is there in the chat box that how you convince the 18 plus kids for treating them the अब interviewing and हेल्थ असेसमेंट जिस बच्चे के साथ आपने किया उसके साथ तो आपने रैपो बिल्ड कर लिया ना. सो रैपो बिल्डिंग इज अ मेजर पार्ट विद दिस टीम. कभी हंस के बोलना पड़ता है, कभी स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करके बोलना पड़ता है. सो दिस इज एन आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग विच यू हैव टू लर्न. Convincing every pediatrician can do, because pediatrician has that art of communicating with children. So वो आपको कन्विंस करना है एज ए पीडियाट्रिशियन अंकल आंट, कभी दोस्त बन के और कभी pediatrician बन के. So that counseling part everybody has to learn. I learnt that counseling. I had to go to जामिया because हमारे pediatrics उसमें counseling सिखाई नहीं जाती है. मैंने 1 साल जामिया में जाके गाइडेंस एंड काउंसलिंग सीखा कि कैसे किया जाता है. वो बोल के सम पीपल आर एक्सट्रीमली सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंट, वो जोक भी कर लेंगे, वो सीरियस बात भी कर लेंगे, बट नॉट ऑल पीडियाट्रिशियंस आर लाइक दैट. सो यू हैव टू लर्न दैट आउट ऑफ काउंसलिंग बिफोर you can, so that you can have a rapport with the child. And the other thing, one question is there, CBT, that is cognitive behavior therapy. Is it very easy to use in our office practice, or it is something specialized type of the It is treatment? a specialized therapy because उसमें आपको बच्चे के साथ लग के उसके नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करने हैं विद द पॉजिटिव थॉट्स. नॉट दैट इजी. यू हैव टू लर्न डूइंग सीबीटी. अगर आपने सीख लिया सीबीटी या आरईबीटी, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा काउंसलिंग दीज चिल्ड्रन. Yes, ma'am. Thank you very much for your very One expressive question. and very wonderful session. I think Kiran, so. There is no more Can question. I ask Yes, one yes. question? Okay, okay, सावंत sir. सर, Please. सावंत सर, हाँ Yes, बोलिए sir. सर. मैडम नमस्ते. नमस्ते सावंत सर. मैडम आज ही एक पेशेंट मेरे अंडर में एडमिट हुआ है. एक्चुअली वो मेरे अंडर में नहीं हुआ है. दैट चाइल्ड इज एडमिटेड अंडर द गायनेकोलॉजिस्ट. उस बच्चे को एवरी टाइम एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन शी हैज सम प्रॉब्लम. उसको शी इज लुकिंग वेरी एंशियस एंड स्कूल फोबिया है. शी हैज मिस्ड द लास्ट एग्जाम्स आल्सो बिकॉज ऑफ द सम शी इज स्केयर्ड फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स. और समवेयर उसको कहीं से उसको वो एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट शुरू हो गया है. बट टुडे ओनली शी एडमिटेड विथ मी इन द इवनिंग ओनली. So I have to what things I have to see whether it is a part of depression, anxiety, or something else. Sir, in and around menstruation, पहले भी बाद में भी बच्चों में थोड़ा सा एंजाइटी डिप्रेशन रहता है. इट इज पार्ट ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, इट इज पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल सिचुएशंस. माँ का डर कि कहीं किसी को बताना नहीं, स्कूल में कहीं कुछ दाग न लग जाए कपड़ों के ऊपर, बच्चे हंसे ना हमारे ऊपर, हमें बुली ना करें हमारे को. एंड सम पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ पेन एब्डोमेन, उनको एक्चुअली फिजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं. इसके साथ if it is only during menstrual cycle, then it is associated with the hormonal changes and the anxiety during the menstrual cycle. If it is otherwise present also, ये आपका अगर 2 हफ्ता खिंच गया even post menstruation, तब आपको डिप्रेशन के लिए I think you need to investigate this child. Okay, I will see tomorrow also again. आज evening में that patient if it is admitted will be. persistent, if it is only during the cycles, तब चिंता की बात नहीं है, then it is a physical issue. But अगर वो persistent रहता है in between the cycles also, then you need to investigate this child. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am, for excellent talk, excellent deliberation, and we are very much in having the impression of all the aspects of the suicide as well as the depression of the adolescent group, age group. Thank you very much, ma'am. So over to Dr. Shilpa. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And after this thought-provoking and stupendous session, we are ready for the upcoming jackpot of mastery dispensed by legendary ingenious Padamshree Dr. Pukhraj Bafna, sir. I would like to request Dr. A.P. Sawant, sir, our inordinate and vivacious consultant pediatrician, to kindly introduce our esteemed speaker, Dr. Bafna, sir.
Namaskar, sir. Bafna, sir. It's really Namaskar. very difficult for me to introduce you, but still the instruction given by the IAP to introduce sir is speaking on inculcation of family value in adolescents. We all know that Pukhraj is a precious gem amongst all gems, and also it is also known as yellow sapphire, costly, shining, and has positive effect on health and mind. The same way, Pukhraj sir is the shining star of our CG Academy, not only in CG but at the national level also. Because of his capability, his skills, knowledge, and his services to the human being for children of our country, he has been awarded as Padamshree by President of India in 2011. Sir, he has the experience of interaction with more than 5 lakh adolescents till now. He authored chapters in Bhave's textbook of adolescent, IAP textbook of pediatrics, textbook of medical legal sciences, book of international training for adolescents. Awarded 3 main world records, rather I should say, writing weekly columns in 48 years uninterrupted in newspapers. Book on status of tribal child, research on yoga and adolescent asthma he has done, and he got PhD on that subject also. Other than Padma Shri Award by National IMA, C.T. Thakkar Award in 1979, Dr. B.C. Roy National Award by MCI 2017, Lifetime Achievement Award, Times of India 2018, Lifetime Achievement International Award 2018, and Academy Excellence Award by IAP. Oration, many oration, but the important are World Congress Oration Nagpur 2011, Dr. Swati Bhave and Dr. M.K.C. Nair Oration Award in 2016, and Dr. D.S.W. Oration of our Chhattisgarh in 2016. He is the Chairman, Ethics Committee, Government of Medical College, Rajnandgaon. Sir has done MD, DCH, he got FIAP, FICP, and he has done PhD also, MA in Jain Darshan. He is pediatrician, adolescent health consultant, HOD medical medicine, Chhattisgarh Dental College of Research and Institute, Rajnandgaon. We know that sir is the shining start of our academy. Definitely, sir will teach so many things in his deliberation. I request sir to deliver his talk, please, sir. Thank you, Dr. Sawant. एक बड़ी प्याली के सामने छोटा प्याला रखा है आपने। हजारों प्रश्न ऐसे हैं। सर, मैं एक बात बताऊं, मुझे जब बताया गया कि आपके बारे में कुछ बोलना है, तो मुझे लगा मैं सूरज को कहाँ से दिया दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया सर। बिल्कुल सही है सर, आपकी इनायत है, आप हमको इतना कह रहे हो, पर आपके सामने तो कुछ भी नहीं। कैसे बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बताता हूँ कैसे बोलना। आज शाम को यही स्थिति थी। हजारों प्रश्न ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, और कई उत्तर भी ऐसे हैं जो सिखलाए नहीं जाते। कोई मतभेद नहीं इस बात को लेकर कि पियाली जैसे वक्ता पाए नहीं जाते। अरे वाह। अब प्याली में जितनी समस्याएं थी, उन समस्याओं का हल इस छोटे से प्याले में है। So let us start with the talk. And डॉक्टर प्रकाश ने हिंदी में बात शुरू की थी, इसलिए मैंने कुछ स्लाइड्स हिंदी में भी बनाए हैं। So let us start with. Dear friends, in fact, this topic is
not only for the pediatricians, but mostly for the parents and the adolescents. Family values, life values, they are very, very important from every point of view for all the people who live in this world. Not only children, not only adolescents, not only the doctors, but for everyone. Next one, sir. Why this topic? In fact, after Piyali has spoken on all the relevant topics related to this, this is the burning topic of the day. क्यों? ऐसा क्यों? इस तरह के समाचार कि आज बच्चे ने आत्महत्या कर ली, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, कोटा में ये हो रहा है, इस तरह की न्यूज क्यों में है आज की तारीख में? That's why it's a burning topic of the day and the need of the time that the family values must be inculcated in the adolescents. And this is a problem in every parent's mind. What to do, what not to do. वो लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं कि बच्चा हमारा दिशाहीन हो रहा है, बच्चा डिप्रेस हो रहा है, बच्चा आत्महत्या की कोशिश कर रहा है. What to do? And this is a big challenge in the minds of the parents as well as the whole of the society. Family values are integral part of the health. Why? जब से WHO ने स्पिरिचुअलिटी को हेल्थ के डेफिनेशन में डाला है, तब से ये फैमिली वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, मानसिक दशाओं के लिए भी और बौद्धिक दशाओं के लिए भी और शारीरिक दशाओं के लिए भी. सो दिस इज ए ट्रेनिंग फॉर पेरेंट्स एंड एडोलेसेंट्स टू, क्योंकि जमाना बदल रहा है, इतिहास करवट ले रहा है, द थिंग्स आर चेंजिंग, हवाएं बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, हमारा माइंडसेट बदल रहा है. ये सारी बातें मैडम ने कह दी अपने टॉक में कि आज की पीढ़ी की दशा क्या है. दिस क्वेश्चन हैज, एवरीबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू एवरीबडी. क्या ये पीढ़ी दिशाहीन हो रही है? क्या वे हताशा और निराशा के शिकार हो रहे हैं? कंपटीशन के दौर में वो कहाँ खड़े हैं? क्या वे सब्सटेंस अब्यूज या नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं? क्या वे एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? मैडम हैज गिवन एवरी डेटा कि कितने लोग किस उम्र में कहाँ. क्या हाई रिस्क बिहेवियर उनका स्वभाव बन रहा है? इज इट? एंड इट इज. क्या वे तनाव में रहते हैं? वो तो बच्चा पैदा होती है आज की तारीख में तनाव में रहता है कि माँ ने मुझे पाया नहीं, दूध पिलाया नहीं, स्कूल गया नहीं, बस्ता का बोझ बढ़ रहा है, सो मेनी थिंग्स. क्या आइडेंटिटी क्राइसिस उन्हें खाई जा रही है? इट्स ए बेयर फैक्ट टुडे इन द माइंड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स. क्या भविष्य की चिंता उनको उद्विग्न कर रही है? द करियर, फ्यूचर करियर. क्या उनकी जीवन शैली विकृत हो रही है, हो गई है? दैट हैज टू बी सीन एंड टू बी रिजॉल्व्ड. क्या आत्महत्या की घटनाएं क्यों में खड़ी हैं? अभी अभी मैडम ने सारे आंकड़े आपको दे दिए. क्या उनकी कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति कहीं चुक रही है, कहीं खत्म हो रही है, कहीं हवा में उड़ रही है? आज इन्हीं प्रश्नों को उत्तर खोज रहा है हर पालक, हर परिवार, हर समाज. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फैमिली वैल्यू एजुकेशन, व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक टू यू टुडे. व्हाट इज द एम ऑफ दिस टॉक? हम अपने किशोर बच्चों को एक जिम्मेदार एडल्ट बनाना चाहते हैं, एक होनहार इंसान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं. दैट इज द होल एम ऑफ दिस टॉक. क्योंकि हमारे किशोर बच्चे आने वाले कल के स्वर्णिम भविष्य हैं, ये सब जानते हैं, बोलते हैं, बताते हैं. दिस जर्नी इज डिफिकल्ट बट फैसिनेटिंग, बट नॉट हाइपोथेटिकल और पैची एज अज्यूम्ड. लोग जैसे सोचते हैं कि कितना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं, बट इट इज देयर, दो कॉम्प्लिकेटेड. इट इज कॉम्प्लेक्स बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड. बिफोर इट टेक्स early wrong turn, the adolescent takes early wrong turn. Dear parents and family members, let us join hands because you are the game changer. The parents are the game changer. You are the cornerstone of this topic. ये आपकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, to give family value to the adolescents. ये पारिवारिक मूल्य क्या है? फैमिली वैल्यूज हैं क्या? So many, you can see this. सामाजिक मूल्य जैसे अधिकार, कर्तव्य, न्याय आदि, ये हमको इनकलकेट करना है उन बच्चों में, एडोलेसेंट्स में. मानव मूल्य जैसे नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य जैसे न्याय, ईमानदारी, आध्यात्मिक मूल्य जैसे शांति, प्रेम, अहिंसा, भौतिक मूल्य जैसे भोजन, मकान, वस्त्र, सौंदर्यात्मक मूल्य जैसे प्रकृति, कला, सौंदर्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य जैसे प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, राजनीतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, सेवा भाव, न्यायिक मूल्य जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षा, व्यावसायिक, ये सारी चीजें, दिस हैज टू बी इनकलकेटेड इन द एडोलेसेंट टू अवॉइड दिस डिप्रेशन, टू अवॉइड दिस
आत्महत्या एंड ऑल दैट। हमारे परिवार के प्रबुद्ध बुजुर्गों ने आचरण की पूंजी दी है। जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो इन सबको इनकलकेट करने की जरूरत नहीं होती थी, अपने आप हो जाता था। बट देयर आर पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स, अकेले फैमिली होती है, तो कौन उनको ये सब चीजें सिखाएगा। महापुरुषों ने आदर्शों मूल्यों का खजाना सौंपा है हमको, हमारे देश को सौंपा है, बट आर वी यूजिंग इट? क्या ये सब बच्चों के दिलों में बोना नहीं होगा? ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जो मूल्य जो मैंने बताए हैं, that has to be sown in the minds, in the hearts of the adolescents. Are these family values the value of time that we have to teach to the adolescents? The pleasure of working, काम करने में कितना आनंद, ये उनको बताना होगा. The dignity of simplicity, the worth of character. India is going through the character crisis. The power of kindness, influence of example, obligation of duty, wisdom of economy, virtue of patience, improvement of talent, and joy of origination. See can you see this picture? The $100 million smile. इतनी तकलीफों के बावजूद भी दोनों मजदूरों के बच्चे इतने मुस्कुरा रहे हैं. Because pleasures are the commas to punctuate this sad story of life. Sorry. Why is family important in adolescent development? A family and its members continue to provide valuable role models for a range of behavior, including effective communication. Madam ने भी अभी अपने साथ में बताया कि effective communication is the backbone for the treatment of such patients. Relationship skills, how to maintain the relations, how to make relations, how to maintain relations, and socially acceptable behaviors, most important. The adolescents who are becoming unsocial, उनके लिए समाज में मूल्य क्या, समाज के लोगों से हम बातचीत कैसे करें, उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा हो. This has to be taught. This has to be inculcated in the adolescents by the family members. What is the role of family in value development of adolescents? Each family set guidelines, principles, and norms to inculcate what is right and what is wrong. हम अपने घर में बच्चों को बताता नहीं, ये सही है, ये गलत है, तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. अभी मैडम ने बताया कि कितने देर तक उनको मोबाइल दिखाना, कितने देर तक बच्चों को टीवी दिखाना, all these things. It is educational responsibility of parents to transfer these norms to their children. हमने अपनी परंपराएं, जो जिंदगी हमने जी है, वो हमको इन बच्चों को देना है. Family can teach whatever adolescent needs because child is like a blank slate. Adolescent is also like a blank slate. It uses both hard and soft tools to socialization. Inculcation is an effort to teach adolescents the values the educators believe lead to moral behavior. This is very important. What is the importance of family value? Family values are beliefs, ethics, priorities, and worldviews shared by each family member. पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. हर फैमिली मेंबर के अलग अलग विचार होते हैं, सोच होती है, करने का तरीका होता है. The three main aspects influence family values are parental guidance, पालक जो उनको मार्गदर्शन देते हैं वो. Sibling dynamics, आपका बच्चा है कैसा, उसका एटीट्यूड कैसा है. And the intergenerational traditions, हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी, पिता माँ, कितने कई लोग हैं तो परदादा भी होते हैं. So each family has unique core values based on priorities, प्राथमिकता क्या हो, and needs of individual members. हर व्यक्ति की अलग अलग मांग, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग आवश्यकता होती है. Traveling from grandparents to parents and then to child. ये पीढ़ियां, generations, जो ग्रैंड पेरेंट्स ने जो किया वो बता करता है, फिर बच्चा करता है, फिर उसका बच्चा करता है, फिर पोता करता है, फिर नाती. तो ये परंपराएं जो हमारे पारिवारिक मूल्य होते हैं वो उन सीढ़ियों से शुरू होती है जो नीचे सीढ़ी तक पहुंचती है. Family values. What are family values? These are something that we get from our parents in the form of what? हमको क्या मिलता है अपने परिवार से, क्या family values मिलते हैं? Love, care, trust, honesty, kindness, generosity, empathy, compassion, forgiveness, sharing, and perseverance in many more. दृढ़ता हमको मिलती है हमको अपने परिवार से. और ये सारी चीजें पेरेंट्स इंस्टिल दीज वैल्यूज इन एडोलेसेंस नोइंगली और अननोइंगली. कई चीजें हम करते हैं, बच्चा सीख जाता है देख के, हम जानबूझ के कई बार सिखाते नहीं हैं. Unknowingly they learn it to make them good human beings. These are universal principles which help people live in harmony
with one another in family, in community, in nation, and in whole world. This is the importance of family value. Family values influence adolescents' life. How? That influence adolescents in decision making. आपके जो परिवार की परंपराएं हैं वो उनको संकेत देती है कि आपको निर्णय कैसे लेना चाहिए. They teach making and maintaining relationships. किससे दोस्ती करना, किससे नहीं करना, उस दोस्ती को कैसे निभाना, उस मित्रता को, उस रिश्ते को कैसे निभाना. Influence judgment and behavior and protect adolescents. This is more important. This is the bottom line of this slide. Protect adolescents against making hurtful decisions. किसी को तकलीफ दे, किसी को परेशानी पैदा करे, ऐसे कोई निर्णय आपका बच्चा ना ले. वो ये फैमिली वैल्यूज सिखाते हैं. Now how to inculcate? हम ये वैल्यूज एडोलेसेंट में कैसे कैसे डालें? The guidelines should be clear कि ये तुमको करना चाहिए. Empowerment of the girls and boys in the family. Unconditioned love. निस्वार्थ निशर्त प्यार उनको देना चाहिए कि तुम ये करोगे तो मैं तुमको दूंगा, ये नहीं. Being good role models. जो ऐसा, वो हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, जैसन जेखर दाई देदा तैसन तेखर लइका, और जैसन जेखर घर दुआ तैसन तेखर पैरका. पैरका मतलब द्वार. जैसा घर होगा वैसा उसका दरवाजा होगा, जैसे माँ बाप होंगे वैसे उसके बच्चे होंगे. Providing a nurturing environment. Dr. Piyali has also talked about what should be the environment of the home. Helping teens understand the consequences of their actions. वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, गलत है कि सही है, और गलत है तो हम सुधार कैसे कर सकते हैं. Guiding towards becoming responsible and ethical adults. The word ethical adults, यही हमारी परंपरा है. Improving social life and equality through cleanliness. हमारी प्रधानमंत्री की बात यहाँ शुरू होती है. A good home environment, hygiene and good health. Good health is a part of family values. Food shared and eaten together. हम तो बरसों से कहते आ रहे हैं कि बच्चों के साथ कम से कम एक भोजन, एक लंच, एक डिनर जरूर करिए. अपने मन की बात, उनके मन की बात कहने सुनने का एक मादा, एक जगह, एक प्लेटफॉर्म आपका डाइनिंग टेबल हो सकता है. Gentleness, good manners, cooperation and respect for women and adults should be taught to them. Share model stories with valuable sessions, valuable lessons. बहुत सी कथा कहानियों की किताबें आती है जो उनको पढ़ने की आप दे सकते हैं. Display honesty, kindness, empathy, respect and responsibility in your own actions and interactions. आपका व्यवहार जैसा होगा, आपके बच्चों का व्यवहार वैसा होगा. Offering prayers to God and respecting the beliefs of the family. हमारी जो आस्था है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो सीखे हैं, जो हमारा विश्वास है, वो उन बच्चों को हमको इनकलकेट करना चाहिए. Most effective method of family values. Ask them to read religious and family story books. आपके परिवार में बुजुर्गों ने क्या किया और जिस रिलीजन को आप मानते हैं उसकी किताबें. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गाइडेड बाय एल्डर्स एंड वैल्यू इंस्ट्रक्टर्स. बहुत सी ऐसी सभाएं, बहुत सी गोष्ठियां होती हैं जहाँ इस तरह के बातचीत करने वाले लोग आपको मिलते हैं. कंडक्टिंग टॉक्स एंड लेक्चर्स ऑन वैल्यू ओरिएंटेड एरियाज. reinforcing positive value based behaviors and presenting good role model to learners. मेरे अपने घर में जो मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वैसे मेरे बच्चे सीख रहे हैं, कर रहे हैं. They are doing it. They are doing better than me. Through both verbal and non-verbal communications, talking to adolescents about the importance of honesty and hard work. Parents should serve as mentors. This is important. Parents should serve as mentors, role models, protectors, supervisors. बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कब आएंगे और कब जाएंगे. And friends for their adolescents. Most important. आपके एडोलेसेंट का कोई दोस्त है तो आप उसके पिता से, उनके पेरेंट्स से दोस्ती करिए, उनको घर बुलाइए, उनके घर जाइए और आप खुद मित्र बने रहिए अपने एडोलेसेंट्स के. Why family values we have talked about. पारिवारिक मूल्य जीवन को सही दिशा देते हैं. हम अभी कह ही रहे थे कि दिशाहीन होते जा रहे हैं हमारे एडोलेसेंट्स. एक मजबूत चरित्र के निर्माण में मदद करते हैं फैमिली वैल्यूज, कि हमारे परिवार के कहीं कोई दाग न लगे. मेरे बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते थे उनको 3 ही बातें बोलता था. फर्स्ट, रिमेंबर दैट यू आर ए जैन. सेकंड, यू रिमेंबर दैट यू आर सन ऑफ डॉक्टर बाफना. एंड थर्ड, यू रिमेंबर दैट यू हैव टू लीड योर ओन लाइफ. समाज में दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, एम्पैथेटिक बनाते हैं, सही निर्णय लेने में मदद करते हैं
ये हमारे वैल्यूज अच्छे व्यक्ति, परिवार तथा समाज के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। So parents should realize the importance of values, and life values should be given prime priority to the life of adolescents. सबसे पहली चीज जो सिखाने की, बताने की वो है कि हमारे पारिवारिक मूल्य क्या है, हमारा जीवन मूल्य क्या है, ये हमको बच्चों को सिखाना चाहिए। सॉरी, कैसी हो पारिवारिक मूल्यों की थाली? सादगी की रोटी हो, भरोसे की सब्जी हो, प्रेम की दाल हो, सम्मान का सलाद हो, प्यार का पुलाव हो, प्रेरणा का अचार हो, विश्वास का रायता हो, वफादारी की मिठाई हो, और उसमें एक चम्मच खिलखिलाती हंसी हो, एक कटोरी विश्वास हो, गिलास भर छलकता हुआ बचपन हो उसमें, और प्यार से परोसा हुआ दुलार हो। बस इतनी तो चाहिए जिंदगी की प्लेट में। एंड फॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, we have the meeting of IOP friends of Rajnandgaon here. They are all seeing you all. ये सारे लोग सब चीजें देख रहे हैं, they are enjoying. नमस्कार सर, नमस्कार आईपी राजनांदगांव का आप सबको नमस्कार। ऐसी हो पारिवारिक मूल्यों की थाली और हमारी जिंदगी की प्लेट ऐसी हो। एंड द लास्ट स्लाइड वुड बी, ये बातें गांठ बांध लीजिए। अगर आपने अपने किशोर बच्चों को सुविधाएं और उपहार नहीं दिए तो हो सकता है वो थोड़ी देर रोए, लेकिन अगर आपने बच्चे को पारिवारिक मूल्यों के संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी भर रोएगा। इसलिए परिवार में श्रेष्ठ दान जीवन मूल्यों का संस्कार दान। दिस इज द बॉटम लाइन एंड द मैसेज टू बी गिवन टू ऑल द एडोलेसेंट्स एंड टू द पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सर, बहुत 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 ही अच्छा टॉक था आपका। पर मेरा एक छोटा सा सवाल है सर आपसे। जी जी सर, जैसे ऑलरेडी अभी जिस तरफ से मेरा ये वाला टॉक रखने का रीजन ही वही था कि ऑलरेडी हमारे बच्चे जो है, हमारे टीनेजर्स, दे आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक राइट नाउ। तो जब पेरेंट्स आते हैं ये कंप्लेन लेकर कि जब बच्चे उनकी नहीं सुन रहे हैं, like they want to do what is trending, and trending is live in relationship, trending is drinks, trending is drugs, तो उनको डील कैसे किया जाए? उस अब तो ऑलरेडी दे आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तो उसको कैसे वापस सुधारा जाए? Dealing with adolescents, you know, is learning कथक इन राउंडिंग टेबल। घूमते टेबल पर कथक सीखने वाली जैसी बात होती है अगर आप एडोलेसेंट से डील कर रहे हैं तो। इसके लिए तो हमको पियाली मैडम के पास जाना चाहिए। सारी बातें उन्हें अच्छे से बता दी है आपको। दिस नीड्स काउंसलिंग, बहुत सी बारी बातें। लेकिन ये स्थिति आने के पहले अगर हम अपनी परंपराएं, अपने वैल्यूज बच्चों को बता दें तो ये स्थिति आएगी ही नहीं ना। सो आज जो मैंने बात आपसे की वो ये है कि हम अपने बच्चों को छोटेपन से ही, हमारी जो थाती मिली हमको ग्रैंड पेरेंट्स से, जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, जो हमारे परंपराएं हैं, जो हमारे विश्वास है, जो हमारी आस्था है, हम वो सिखा देंगे। ये मौका आएगा ही नहीं। और जब आ गया है मौका, देन द काउंसलिंग इज देयर, देन व्हाटएवर मैडम हैज टॉक्ड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दीज थिंग्स, वो लागू होता है। लेकिन उन सबसे पहले प्रिवेंटिव अगर है तो ये हमारे पारिवारिक मूल्य हैं जो हमको देना चाहिए। तो सर, हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, क्या हमको स्कूल्स में अपने जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उसमें ये मैंडेटरी चेंजेस नहीं करने चाहिए? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये चीजें उसमें डाली जाए। मैडम, ये तो सिलेबस में होना चाहिए, सिलेबस का पार्ट होना चाहिए सर। यस यस। अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हु कैन गिव यू दीज थिंग्स, दीज टीचिंग्स। ये सारा ज्ञान, ये नॉलेज दे सकते हैं। और मॉरल वैल्यू की किताब भी तो होती है, लेकिन इसको हमारे सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस खत्म हो गया वो उससे, सिलेबस से। जी तो उसके लिए क्या सर आईएपी या एएचए कुछ कर सकते हैं कि वापस वो एक मॉरल वैल्यूज वाला सब्जेक्ट एज अ डॉक्टर मैंडेटरी उपेंद्र यहाँ बैठे सब्जेक्ट? हैं, डॉक्टर माने यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर पियाले यहाँ बैठे हैं। दीज पीपल कैन डू इट। और हमारे पास तो एक बहुत बड़ा हथियार आज किरण के नाम से है, ही कैन डू इट। इसीलिए सर मैं इस आवाज यहाँ पर उठा रही हूँ कि ये चीजें करनी चाहिए, सो दैट सभी लोग तक मेरा मैसेज जाए कि राइट फ्रॉम बिगनिंग, जब हम नर्सरी से या प्ले ग्रुप से मैंडेटरी टॉपिक स्कूल में रखेंगे तब तो हम अपने पर्पस को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज तो हम सिर्फ डिप्रेशन ही डील करते रह जाएंगे या एडोलेसेंट इश्यूज ही डील करते रह जाएंगे, प्रिवेंशन तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम यही तो चाह रहे हैं कि कविता की आवाज वहां तक पहुंचे। जी 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 जी, इसीलिए मैं अपनी आवाज यहाँ रख रही हूँ सर। जी, एक्सेलेंट टॉक सर, एक्सेलेंट टॉक। एक्चुअली नाउ इट इज स्पोरेडिक फैमिलीज है ना सर, तो हम वो इनकलकेशन कर नहीं पाते जो हमारी पहले कंबाइंड फैमिलीज होती थी, जो हम बहुत सारे फैमिली वैल्यूज को
ट्रांसफर करते थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उस जनरेशन को अब हम लोगों को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया। एक्सेलेंट टॉक, कंग्रेचुलेशंस। Sir, we have a question in chat box. Should we force our adolescents to read the religious books? नो, वी शुड नॉट फोर्स। हम उनके साथ बैठ के पढ़ें, हम उनको बताएं कि इसको पढ़ने से तुमको आनंद आएगा, यू विल एंजॉय इट। हम फोर्स करके पढ़ाएंगे तो कल उसको हेट्रेड शुरू हो जाएगी धर्म से, सारी चीजों से। तो यू हैव टू बी फ्रेंड विथ हिम, उसके साथ बैठ के पढ़ें, उसको कभी कभार उसकी बातें बताएं। जब उसको आनंद आने लगा, उसमें एंजॉय करने लगेगा, वो कुछ सीखने लगेगा, देन ही हिमसेल्फ विल आस्क कि कहाँ लिखा है ये, मुझे बताओ। फोर्स नहीं करना चाहिए। Exactly, sir. I agree with you, sir. The role play is more important than the just giving the instructions to our kids, sir. ठीक बोल रहे हैं। इसलिए एडोलेसेंट हेल्थ के जितनी हमारी मीटिंग्स होती है उसमें रोल प्ले जरूर रहता है। Right. Yes. Any other questions from the audience? सारे उत्तर तो मैडम ने दे दिए हैं, अब कुछ बचा भी है क्या? सर मैं कहूंगी सारे उत्तर मैडम और सर दोनों ने मिलकर दे दी, इसलिए कोई क्वेश्चंस नहीं बचे। But thank you all very much for थैंक्स टू giving me this opportunity to meet you all. सर आपको और प्याली मैम को सुनना, ये जितने भी यहाँ पर ऑडियंस है उन सबके लिए सौभाग्य की बात है। सो इट वाज रियली वंडरफुल, मतलब नो वर्ड्स कैन से थैंक्स टू यू एंड प्याली मैम। तो extremely Thank you. thankful to you. Dr. Kavita, Dr. Shilpa, just I want to convey one thing from this platform. Chhattisgarh Academy of Pediatrics welcome all of you in the prestigious and most awaited zonal conference, the Central Zonal Conference, which is to be held at Raipur only on 30th and 31st of August and 1st of the September. This will be 3-day conference clubbed with the state conference, that is CG Pedicon. So we will be having the CZ CG Pedicon in August and September. So I invite everyone from this platform to be there and join us for this great conference. Thank you, sir. Thank you, Bafna sir, for such an engrossing talk, and we will definitely have some inputs, taken some messages from the talk from Dr. Piyali and Dr. Pukhraj Bafna sir. And with this, I would like to request Dr. Kavita Meghani ma'am to have a vote of thanks. सर मैंने जैसे पहले ही बोला कि थैंक्स शब्द बहुत ही छोटा हो जाएगा आपके और प्याली मैम के लिए, but I would still say thanks to all the participants. It was really a pleasure to see you all on this platform. Dr. Upen sir, Dr. Pramod Jog sir, जितने भी सभी senior persons, Dr. Amar Singh sir, Sarabhai sir, यहाँ पर आए, and so many participant list was 83 sir. So I'm thankful to all of you, and special thanks to Dr. Piyali ma'am and Dr. Bafna sir for this wonderful, excellent talk, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Piyali ma'am. everyone. Thank you. Thank you, madam. So we can leave the meeting here. Yes, ma'am. We can abort the meeting. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you, everyone. Thanks a lot. Thank you.